Good morning, students. Now, in chapter 1, integer, we are going to start exercise 1.1, question 1. There are 4 parts given in exercise 1.1, question 1. Question 1 is following number line shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day. मीन्स यहाँ जो नंबर लाइन दी है उसमें अलग अलग प्लेसेस का टेम्परेचर दिया है पर्टिकुलर डे का. सो फर्स्ट ए पार्ट इज ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क ऑन इट. मीन्स जो एरो यहाँ नंबर लाइन में दिया है उसका हमको रीडिंग लिखना है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के अंदर. नाउ लुक हियर, what is given reading? -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20 and 25 are given. So other reading are not given, that we have to write. Look here, 0 is given, so left side which integer will come? Negative integer, right? So after 0 I have written here -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -10 and -10 already given. Now look here, first place is Lahul Spiti, right? So where is the arrow? It is on -8, right? So लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या होगा? -8. सो आई हैव रिटन हियर प्लेस लाहौल स्पीति और टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस. नाउ लुक हियर, श्रीनगर सेकेंड प्लेस इज गिवन श्रीनगर. सो वेर इज श्रीनगर? इट इज़ ऑन -2. सो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ श्रीनगर? It will be -2 degree Celsius. Now look here. Here Simla is given. Where is Simla? Mark on 5. So what is the reading of Simla? 5 degree Celsius, right? Now look here. Ooty is given, but reading is not given here. Number is not given. So what I will do? After 10 what I will write? 11, 12, 13, 14 and 15, right? Look here. Here after 10, 11, 12, 13, 14 and 15. So I have to write here number first. So I will write here after 10, 11, 12, 13, 14 and 15. 15 is already given, right? So what is the temperature of Ooty? It will be 14 degree Celsius. Now look here, Bangalore. So after 20 no number is given, so I will write here 21, 22, 23, 24 and 25 already given. Now what is the temperature of Bangalore? It will be 22 degree Celsius. Okay, now first part A is over. Now second part B. Look here, what is the temperature difference between hottest and the coldest places among the above? मीन्स जो ये 5 प्लेसेस दिए है उसमें से सबसे हॉट प्लेस कौन सा है और सबसे कोल्ड प्लेस कौन सा है? हॉटेस्ट मीनिंग जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो हॉटेस्ट होगा, राइट? और जो सबसे कम होगा वो कोल्डेस्ट होगा. नाउ लुक हियर, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेस हियर? वी हैव रिटन लाहौल स्पीति -8 डिग्री, श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस, शिमला 5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी 14 डिग्री सेल्सियस, बेंगलुरु 22 डिग्री सेल्सियस. तो विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेस? तो बेंगलुरु इज़ given 22 degree Celsius. So Bangalore is the hottest place here. Now look here, which is the coldest place? In negative integer, bigger number we call
smaller, right? So which is the smallest number here? -2 and -8 degree Celsius. So -8 is the smallest number. So which is the coldest city? So Lahul Spiti temperature is very cool, -8 degree Celsius. So what we have to find? Difference, right? What is the temperature difference between hottest and coldest places? डिफरेंस का मीनिंग क्या होगा? माइनस. तो वी हैव टू फाइंड हॉटेस्ट सिटी एंड कोल्डेस्ट सिटी. नाउ विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेस? Bangalore is the hottest, so I will write hottest temperature is in Bangalore is equal to 22 degree Celsius. Now coldest temperature is in Lahul Spiti is equal to -8 degree Celsius. Now what we have to find? Difference. तो हमेशा हम क्या करते हैं? बिगर में से स्मॉलर माइनस करते हैं, राइट? तो डिफरेंस, सो आई विल राइट हियर डिफरेंस इज इक्वल टू विच इज़ द हॉटेस्ट? 22 degree Celsius. तो 22 degree Celsius minus difference we have to find, so I will write here minus. And coldest place is -8 degree Celsius, Lahul Spiti, right? So I will write here 8 degree Celsius. Now 22 degree minus what we will write? Plus. So 22 degree Celsius plus 8 degree Celsius is equal to 30 degree Celsius. The difference between hottest and coldest places is 30 degree Celsius. Now look, C part. What is the temperature difference between Lahul Spiti and Srinagar? Right? Again we have to find difference. Difference means we have to subtract, minus, right? Now what is the temperature of Lahul Spiti? -8 degree Celsius. And what is the temperature of Srinagar? -2 degree Celsius, right? Look here. So now what we write? Difference between Lahul Spiti and Srinagar is equal to, now हमेशा हम क्या करते हैं? बिगर में से स्मॉलर माइनस करते हैं. डिफरेंस फाइंड करना है. तो श्रीनगर का क्या है? -2, राइट? तो इन -8 एंड -2 विच इज़ द बिगर नंबर? -2. सो आई विल राइट हियर -2. डिफरेंस फाइंड करना है, सो आई विल राइट हियर माइनस. अगेन व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ लाहुल स्पीति? -8. सो अगेन आई विल राइट हियर -8 degree. Now -2 here, minus plus, so I will write here 8. तो 8 - 2 6, और बिगर नंबर क्या है? 8. तो सिंबल क्या आएगा? प्लस. तो 6 degree Celsius. So the temperature difference between Lahul Spiti and Srinagar is 6 degree Celsius. Now look here again, D part. Can we say temperature of Srinagar and Simla taken together is less than the temperature at Simla? Means क्या बोला है? Can we say temperature of Srinagar and Simla taken together? Taken together means we have to add, means we have to do plus here. श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर का क्या करेंगे? प्लस करेंगे. देन वी हैव टू चेक इज़ लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला. तो जो ये दोनों का प्लस करेंगे वो जो शिमला का टेम्परेचर है उससे लेस होगा, वो हमें चेक करना है. नाउ व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर? -2 degree Celsius. एंड व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ शिमला? 5 degree Celsius.
फर्स्ट वी हैव टू ऐड टेकन टुगेदर मीन्स हमको श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर साथ में लेना है, मीन्स वी हैव टू ऐड. सो आई विल राइट हियर टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला is equal to, what is the temperature of Srinagar? -2 degree Celsius and means together we have to take. So I will write plus. What is the temperature of Shimla? 5 degree Celsius, right? Now look here, -2 degree Celsius plus 5 degree Celsius means bigger में से smaller माइनस करेंगे. 5 - 2 क्या होगा? 3 degree Celsius, right? Now look, check what is the temperature of Shimla? 5 degree Celsius. So I will write now temperature of Shimla is equal to 5 degree Celsius. Now what we have to check? First taken together is less than temperature at Shimla means ये दोनों का हमने प्लस किया तो जो शिमला का टेम्परेचर है उससे लेस है. लुक हियर, नाउ व्हाट इज द temperature of Srinagar and Shimla? 3 degree Celsius. And what is the temperature of Shimla? 5 degree Celsius. So yes, it is less. So therefore 3 degree Celsius is less than 5 degree Celsius means 3 degree temperature less है 5 degree की comparison में. Therefore temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature of Shimla, right? So first part is over. Now look again question, is it also less than the temperature at Srinagar? अभी जो श्रीनगर का टेम्परेचर है उससे भी लेस है मीन्स कौन सा? श्रीनगर और शिमला का जो टुगेदर लिया है उसकी कंपैरिजन में श्रीनगर का भी लेस है. तो श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है? -2 डिग्री सेल्सियस, राइट? और श्रीनगर और शिमला का टुगेदर लिया है वो 3 डिग्री सेल्सियस है. तो कौन सा बड़ा हुआ? 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हुआ, राइट? तो आई विल राइट फॉर सेकेंड temperature of Srinagar is equal to -2 degree Celsius. Now here Srinagar और शिमला का टुगेदर क्या है? 3 degree Celsius. Now 3 degree Celsius is greater than -2 degree Celsius. Therefore temperature of Srinagar and Shimla taken together is not less than the temperature at Srinagar. Okay students, so I have solved question 1 part A, B, C, D. So students, I will send PDF, then you write in your notebook question 1 and 2. Okay, thank you.